very good morning to all the students of class 7. Dear students, I hope you people are in good health and taking care of yourself. The sentence of the day is, work hard in silence and let the success make the noise. I repeat the sentence of the day, that is, work hard in silence and let the success make its noise. So dear students, now we will be recapping what all we had done. Now today's session we will be doing inside our earth, which we had already done, but we need to recap it again so that to make the things clear that you people have not forgotten. In this we have taken earth inside and outside. Now students, as we have discussed, outside the earth we can see many things like mountains, trees, then you, me, rivers, valleys, so many things. But what is inside the earth? Have anyone seen? No, not even me. We have not seen what is inside our earth. So today we will be talking about inside our earth. Inside our earth is like an onion. प्याज की तरह से, प्याज के कितने सारे folds हैं. इसी तरह से earth has so many folds inside it. So we'll be talking about the several folds of the earth. जो हमारे earth के inside several folds हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे. But we'll be in this session, in this class, we'll be taking just the 3 of them. That is, the first one is the crushed, then the mantle, and the core. As we had already discussed that the crust is the uppermost layer of the earth's surface, then comes the mantle and then the core. Now, let me tell you with one more example. Let's take earth as a cake of peace. Now this cake of peace, the uppermost layer is the crushed, then goes in the inside is mantle, and the innermost is core. And dear students, these are the 3. And if we take the example again of a half-boiled egg, the shell is the crushed, the white is the white, is the mantle, and the yellow one you can say core. Or we have taken the example of onion also, as onion has so many layers. Like that only earth has many layers, that is the inner mantle, outer mantle, inner core, outer core, so many parts which are not required in this class, but further we will be going on these topics too. Now coming up to the first thing, that is your crush, which I told you is the shell. First one, the white shell of the earth's crust. The continental crust and the ocean crust. पहले हमने लिया crust जो कि shell है, जो white calcium जो होता है, the shell के ऊपर जो, जिसको हम shell भी बोलते हैं, वो hard होता है लेकिन बहुत पतला होता है. इसी तरह से जो वो crust है, crust is hard but very
थिन। क्रस्ट की जो लेयर है वो हार्ड है बट बहुत थिन है। एंड क्रस्ट के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, दो टाइप के क्रस्ट है। क्रस्ट इज अबाउट 35 किलोमीटर्स, आई टोल्ड यू। अब आप कहोगे कि वो डीप नहीं है, बट अर्थ इज थाउजेंड्स किलोमीटर डाउन, सो उसमें से 35 किलोमीटर से वेरी लेस, सो द अबाउट 35 किलोमीटर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास है इसका। और उसके बाद जो 5% है वो ओशियानिक फ्लड है, which I had already shown you with the help of the diagrams. That is, if we take Earth like this, this is your lithosphere. This is your continental crust and this is your oceanic crust. This is 35 kilometers deep and this is 5 kilometers. But इसका फर्क ये होता है कि 35 किलोमीटर्स जो है क्रस्ट, वो क्रस्ट जो 35 किलोमीटर है दैट इज वेरी सॉफ्ट, दैट्स नॉट हैवी, क्योंकि वो जैसे एक थर्मोकोल का हम बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज़ नॉट हैवी, हम उसको बहुत आराम से उठा सकते हैं। बट जो 5% है दैट इज वेरी हैवी विच कैन बी कैरिड आउट। But the oceanic crust which is 5 kilometers is heavy, whereas the continental that is 35 that is light in weight. So this is the difference between the two. At the lower level of that, उसके एकदम ही नीचे हमारा अगर हम diagrammatical उसमें देखेंगे तो this is 35 kilometers. अगर हम ऐसे जाएंगे तो this is the 5 किलोमीटर्स। ये डिफरेंस है ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल। नाउ बिल्कुल उसके नीचे आता है मेंटल, दैट इज 2900 किलोमीटर्स अबव द क्रस्ट, मेंटल क्रस्ट। देन मेंटल दैट इज द मेन मिनरल कंसिस्टेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इनका जो मेन जो है वो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दैट इज SiLe, मिक्स हियर। देन ओशियानिक क्लास का है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, that is SiMe, Sima. This is Sial and Sima. So just beneath this it is mental, that is exactly 2900 kilometers deep, 2900 kilometers ये deep है। उस mental extends up to the depth of the 2900 kilometers। फिर आ जाता है हमारा कोर। जो कोर जो हमारा है दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट, और जो रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स। कोर का है 3500 किलोमीटर्स। कोर का जो रेडियस है दैट इज 3500 किलोमीटर्स। The main it is mainly made up of निकल एंड आयरन। निकल और आयरन से बना हुआ है, और आयरन को हम फेरियस भी बोलते हैं। तो निकल Ni प्लस आयरन दैट इज Fe, तो इट मेक्स निफ। उसके बाद हमने किया था द अर्थ क्रस्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स हम आ गए थे। रॉक्स को हम कह सकते हैं मिट्टी भी। अब रॉक्स के अंदर देयर आर मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, natural masses of minerals, matters, there are of different colors and sizes and texture. There are 3 major types of rocks which we are going to do now. So सबसे पहला है igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock.
3 टाइप्स के हमारे रॉक्स। सबसे पहले कमिंग अप टू इग्नियस रॉक, दैट इज इग्नियस रॉक जो है वो वर्ड जो हमने लिया है वो अग्नि फायर से लिया है। इट इज नेम्ड आफ्टर द वर्ड फायर। अब नाउ यू विल से व्हाई अ रॉक विद रॉक जो कि एक मिट्टी बोलते हो आप, तो उसको आप हीट से कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसलिए हमने उसको बोला है when the molting magma cools it becomes solid rocks thus formed as igneous rocks. They are also called primary rocks. ये primary rocks भी कहलाते हैं। जब molting magma पिघल जाता है और उसके बाद जब वो कूल हो जाता है और सॉलिड रॉक बन जाता है, क्योंकि मैग्मा तो गर्म होता है ना, तो उससे आप याद रखना जब वो कूल हो जाता है और फिर उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है, दैट बिकम्स द इग्नियस रॉक। नाउ दिस इग्नियस rock thus forms is called the igneous rock. This is also known as primary rock. अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं igneous rock igneous rocks, एक होता है intrusive and another one is extrusive. इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव दो टाइप्स के ये रॉक्स होते हैं। अब नाउ व्हाट इज इंट्रूसिव एंड व्हाट इज एक्सट्रूसिव, मूविंग ऑन टू दोज थिंग्स। इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो लावा इज एक्चुअली red molting magma coming out of the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth surface, जब ये molten lava earth के surface पे आता है, it rapidly cools down, बहुत जल्दी से ये ठंडा हो जाता है and becomes solid, बिल्कुल solid हो जाता है. Rocks form in such a way on the crust are called intrusive igneous rocks. जब ये अर्थ के क्रस्ट पे जम जाते हैं तो intrusive igneous rocks बन जाते हैं. They have a very fine grained structure, बहुत fine grained structure है. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Deccan Plateau जो है वो basalt rock का बना हुआ है. Deccan rock plateau जो बना हुआ है basalt rocks का बना हुआ है. Now coming on to intrusive igneous rocks. Sometimes the molting magma cools down deep inside the. ये अर्थ के सरफेस पे हो रहा है. Intrusive है on earth's surface. Intrusive है on earth's surface. और extrusive, that is deep inside the earth. earth के अंदर, deep inside the earth. Crushed solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Now next in this we will be doing, now after this is sedimentary and the sediment. How are the sediments and sedimentary rocks formed? Rocks rolls down, crush and hit each other and are broken down into small fragments. These small particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are composed and are becoming layers of rocks.
These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and the other microorganisms. ये सब fossils भी हो सकते हैं, animals, plants और other microorganisms. अब now important fact is that the igneous rock and the sedimentary rocks one changes into metamorphic rock. ये पूरा एक चेन है, एक दूसरे में ये लोग चेंज हो जाते हैं. अब आपको इससे पहले आपको मैं बताती हूँ how does it happen. These rocks undergoes deep heat and pressure. बहुत ज़्यादा heat और pressure के अंदर जाते हैं. For example, हम लेते हैं clay, changes into slate, and limestone into marble. Sedimentary rocks turns into the metamorphic rocks. Sedimentary rocks जो है वो metamorphic rocks में बदल जाता है. Now the igneous and the sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks. हम पहले metamorphic rocks को पढ़े थे, फिर उसके बाद उसके बारे में. Greek word metamorphic means changing of the form. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks. Igneous and now you will say how. Now this needs to be explained with an example of your diagram. That is the formation of metamorphic rock. इसमें कैसे होता है, ये है आपका अर्थ फॉर्मेशन. पहले यहाँ से आप मैग्मा प्रेशर दे रहा है, यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है और यहाँ से प्रेशर आ रहा है. मैग्मा जो है वो हीट दे रहा है और ये प्रेशर आ रहा है. हीट और प्रेशर से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है. हीट इज कमिंग, हीट ऑफ द फ्रॉम द लेयर्स, और उसका जैसे कि आप गैस पे अगर एक डायरेक्ट कोई भी चीज कुक नहीं करते हो, यू नीड अ प्लेट इन बिटवीन, यू नीड अ लाइक तवा, लाइक द टू मेक अ चपाती यू विल नॉट पुट चपाती ऑन फायर डायरेक्टली. और प्रेशर और हीट कैसे, प्रेशर व्हेन यू knit a dough and heat when you put it on the gas to be cooked. So heat and pressures makes the metamorphic rock. Now these uses of rocks. First, the hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Roads, houses और building बनने के लिए. Stones are used in making games. Stones की games बनती हैं, ये तो हमने पढ़ा था पहले भी. For example, you might be playing 7 stones, that is Pittu, horoscope, that is Tapu, 5 stones, that is Giti. So the rocks are used in making mountains also. Red Fort and Taj Mahal are the 2 examples in your book also. The Red Fort is made of red sandstone and the Taj Mahal is made up of white marble, which is clear to you. Now coming up to the formation of rocks. How are the rocks formed? This might be giving you the idea of how the rocks have been made. जैसे कि वाटर साइकिल होता है. वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले ओशन होते हैं, देन प्रेशर गोज, वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स देन बर्स्ट होते हैं, रेन फॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन. तो ये पूरा का पूरा आपका वैसे ही रॉक साइकिल है. वॉल्केनो, when the volcano erupts, falls on the earth surface, then उसके बाद igneous rocks is formed. Then this igneous rock, when igneous rocks
सेडिमेंट्स गिर जाते हैं फर्स्ट ऑन द फ्लोर, तो सेडिमेंट्स बन जाते हैं. And when this sediments solidifies to make sedimentary rocks, and when this sedimentary rocks then again becomes, when with the heat and pressure again becomes the metamorphic rock, and this metamorphic rock becomes the magma, and the process goes on. So this is the rock cycle. Rock cycle, if defined, this process of transforming the rocks from one to another render certain conditions in the cycle manner is known as the rock cycle. The process of the rock cycle, as already explained, when the molten magma cools it down into small particles that transpose and deposits to form the sedimentary rocks. And when these sediments, when the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. So this is magma, igneous rocks, sedimentary rocks, sediments, then sedimentary rock, then the metamorphic rocks. Now the process of the rock cycle, the metamorphic rocks which are still under heat and pressure melts down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. I don't think that you know that. Let me clear it up. Rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important for humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc., in medicines, in fertilizers, etc. So this was all in the recap of this chapter that is inside our earth. We will be continuing with new topics in our next session. Thank you and have a nice day.